Suppose I want to select 8 candidates, so why I should select Nilisha Jain and reject those 7? देखो क्या होता है ना, अपनी वैल्यू आप खुद बनाते हो। ये लाइफ का भी फंडा है और इंटरव्यू का भी। ईमानदार है ना, आपने बिल्कुल सही आंसर किया कि मैं जाऊंगी हायर पैकेज पे। रेज्यूमे में आपने बहुत ज्यादा लिख दिया है। ऑनेस्ट फीडबैक दूंगा, बुरा लगे तो बुरा। देखो जो है मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, इसलिए मॉक इंटरव्यू होता है। Nilisha, a very good afternoon. How are you? Yeah, I'm doing great, sir. How are you? I'm also good. Could you please introduce yourself in bit detail? Sure, sir. First of all, thank you for giving me the opportunity for introducing myself. As you know, I'm Alisha Chen. I born and raised up in Gwalior only. I did my schooling from St. Paul, Padao in 2019, and currently I'm pursuing my bachelor's of engineering in information technology branch from ITM college. And if I talk about my technical interest, so I am more interested into cloud computing, as cloud computing is its infrastructure, it is its client server model, and etc. Yeah, and if I talk about my hobbies, so I am into reading. I love reading, and I believe in making fact based decision rather than opinion based. So yeah, that was pretty much about me. Thank you, sir. Okay, so could you please tell me a bit about your family background? Yeah, so I come from five members family. My father is a businessman and mother is a housewife, and I have two younger siblings. Are these brothers, sisters, or a Yeah, combination of both? yeah, both are sisters. We are three sisters. Okay, so you are the eldest one. So, Yes. don't you think joining your father's business would be a right option rather than joining our company for you? So maybe I would join his business later, but for right now, I want to. Actually, I am enthusiast for the professional background. I want professional. I want to surround myself in professional people. So first priority is this. If you are comfortable, could you please tell me something about your father's business? What this is all about? Yeah, father's business is about stones of emerald. If you can understand, I can elaborate more. And Yeah, other, I got it. It's like about stone extraction and mining, or basically the designing part of stone. yes, sir, we rings. I can Okay, explain. okay, okay. I got it. I got it. No issues. Yes. Um, so I want to know that you are graduated from ITM Gwalior. So could you please tell me any 5 specialities of your city? So first of all, I'm not graduated yet. I'm pursuing my graduation. Uh, yeah, specialty of cities. So here it is actually Jai Vilas Palace, Gwalior Fort, and here and there are beautiful gardens as well, and it is developing more. City is developing more day by day. Okay, okay. Great. Let us move ahead to your technical skills. You are good at cloud technology, OOPS, data structures, C++, HTML, and CSS. So, coming to OOPS concept, what was the need of classes and object? In C language, there were no classes and object. Then C++ introduced, and there were classes and object. What was basically the need of classes and objects? So for first thing, if I can say for reusability of code, classes actually breaks the program into an object and different type of objects. An object can work on real entities. So basically, class is the actually producing objects. So and yes, sir. Could you tell any real life example of classes and objects? Yes, sir. Suppose vehicle is a class, so its object will be it is producing like bus, car, and Activa kind of objects. Okay, okay. What are inline functions? In functions. Sorry, sir. I did not revise. No issues, no issues. Uh, next question. How dynamic memory is allocated in C++?
So dynamic memory allocates in the heap. A program works like this: when we write the code, it copies into the main memory first, and the stack holds the functions, and the programmer the request come from data by the program allocated in the heap in the way of dynamic memory. Yes, sir. Okay. So which keyword do we use basically in order to allocate dynamic memory, such as we have malloc and calloc in C. So what is the keyword which is used for dynamic memory allocation in C++? Keywords. Sorry, sir. I can't answer. Okay. No issues. No issues. What is the difference between data hiding, data abstraction, and encapsulation in OOPS? Sir, basically data hiding and abstraction is same, and encapsulation is totally different. Encapsulation means hiding data members and member function in a class, and those data members can be accessed by the member function of that class only. So it is not a data hiding concept. It is a security concept. But abstraction is just showing the necessary information, not on hiding the implementation part. So, and abstraction is not related to security. Okay. Which sorting algorithm do you use the most while coding? For coding, so sorting algorithm, so I would go with bubble sort maybe. Could you please explain what bubble sort is? So in bubble sort, we basically the first element bubbles up to the end of the list, and it is also called the exchange sort. So it is less time consuming than selection sort. So, what is the mechanism? How does it actually work? Suppose I give you an array of four elements. I have Yes, 2, 4, 1, 3. So, it should print the output as 1, 2, 3, 4. So, how does it actually work? I yes. don't want the exact code, but the logic, the mechanism behind it. Yes, sir. So, sir, the array is 2, 4, 1, 3. So, first two elements will be checked. So, 2 compare with 4. So, it is checked that 2 is less. So, this is a sorted array. Array it is sorted. Then 4 will compare with the next 2, 4, 1. 4 and 1 will be compared. Then 4 is greater, then 4 and 1 will replace. Then 4 and 3, then 4 will go to the 3 place. Then 2, 1, 3, 4 left. Then again process start with 2 and 1. So, in the first process, what basically have we achieved? So in first process we compared the two elements initially. See, in the first process, we compared the two element. In the second, also, we will compare the two Yes, element. After the first iteration, what exactly we will get? The output after the first iteration will be 2, 3, 2, 1, 3, 4. yes, sir. So, what are we exactly getting Yes, sir. after first iteration? As I said that the largest numbers bubbles up to the end. So this force reach to the its destination. Okay, okay, great, great. What is the difference between method overloading and method overriding? Sir, basically method is function. Function overloading is like creating function with same name. Here are two rules that if data type of a function same, number of data types should be different, and if number of data same, so data types should. Sorry, I'm confusing. If number of data are same, data types should be different, and if data type same, number of data should be different. But in function overriding, we override the function. If you I give you an example, is for suppose in parent class there is a function show, and same as the function is based in child class. But so child will take its own function first rather than asking for its parents. But the child class will take those function from its parent what the child class doesn't have. So this is the difference. Okay. Okay. In bubble sort, what is the best case and worst case time complexity? Sir, in bubble sort, best case time complexity is big O of n, and worst case is big O of n square. And in best case, sometimes big O of n square also happens. So the both. Sometimes means when? Sir, because
here loop goes like both two for loops here work. So uh, So if there are two for loops, then how big of n will be achieved? so big O of n is the best. Big O of n is the best case for any algorithm. So In bubble sort, you are always going to use two loops. So basically, n into an n square should be there always. So how big of n will be achieved? I am not able to understand this. yes, Okay, suppose you are developing a app. The size of the app is 9 MB yes, and the app takes 15 seconds to open. Okay, now again you need a better app and you try to reduce the time, and now your app opens in 4 seconds instead of 9. It takes just 4 seconds to get open, right? But the size of the app is now from 9 MB it goes to 18 MB. The size is almost double. So is it a good opinion to do so? Out of time and space complexity, what you will prefer? I have tried to reduce the time. Suppose I'm opening an app, now I'm waiting for 9 seconds. Okay, it's opening. But the app size is 9 MB. The phone will not hang much because it consumes less memory. But now your user complains and you reduces it to 4 seconds. Now you open the app, it gets immediately open. But the space it takes is just double, 18 MB. So is it a good choice, or or it was worthy to wait for it? so Out of time and space complexity, what should be given preference according to you? sir, if we talk about at user and time, focusing on time is more important because if the user will wait, the more they will not use the app more. So the time complexity should be consumed. If I'm not wrong. But space is also a concern. If I take the example of a simple Apple iPhone, so you'll get it at around 60,000 if you take 128 GB. But if you just double the memory to 56 GB, you'll have to pay extra 10,000 rupees. So again, space is costly. Yes, sir. Okay, great. You might have heard about arrays and linked lists. So can you please tell me the scenarios where array should be used over linked list, where array should be preferred instead of linked list? We should be preferred. So since array is a continuous block of memories, so where we don't need to point the next node, we can use array and Okay, how many types of headings are there in HTML? so what? How many types of headings are there in So HTML? 5 headings: H1, H2, H3 till H5. Till H5. Okay. Can you please tell me the importance of cloud in today's world? Yes, sir. So basically, cloud is the enhancing technology nowadays. Many businesses are turned onto cloud. So basically, cloud computing is especially useful for IT resources because cloud computing is a computing service made over the internet, and cloud computing is a pay-as-you-go model. Means paying only for what you use. So it is very flexible and scaling in many features. So, Okay. We are conducting a virtual interview here. So what is cloud used here, or there is no use of cloud technology right now? What we are doing? yes, of course. This is actually in cloud there are different type of instances. If I talk about, as I learned in AWS cloud, there are EC2 instances, means elastic cloud compute. So here are different type of instances like general purpose instance. So in general purpose instance we use general purpose instances used for gaming and for this kind of so it includes the virtual recording, video recording also. So we can say it is based on general purpose instance Okay. Great enough. What is platform as a service in cloud? platform. PaaS.
as a service. Yes, sir. So basically, where we provide the platform, because in cloud there is a service like serverless, where we don't provide the infrastructure. So where we provide the platform, it is called platform as a service. Here we have to think about code also and infrastructure also. But when we talk about serverless, here we don't have to think about infrastructure. Cloud provides infrastructure. We just have to focus on code. Okay, out of 10, how do you rate yourself in coding? In coding. So, to be very honest, I would rate myself 7.5 for now. But I'm Okay. continuously. Okay. Suppose I want to make a program where the input given as date and time. Okay. And I want to find the angle between the hour and the minute hand in an analog clock. Okay. Suppose I give the date as, day as uh, the hour as 12 and minutes as 0. Okay. Okay, so the hour and minute hand there will be 0 degree angle if you're able to Yes, sir. imagine. So I'll be giving you hour, I'll be giving you minute, and I want you to tell me the angle. How would you frame a program? I just want the logic, not the actual code. Logic, sir. So first we will assign some. So first we will create the function, and we will assign the arguments. No, not arguments. We can go with without argument. I just want the logic. Okay, I'll make function for you. I'll write code for you. I just want these 2 to 3 lines, which are the main logic of your, So, this so project. there will be two inputs basically, the minute and the hours numbers so you would give. So we would simply use the formula, and we can write. And also there will be one variable also which will be stored the output of the solution. Formula we can use like 30 into hour minus 11 upon 2 into minute, and we can store this formula into the next variable, and then we will see out we can get the output. Okay. Uh, is Python a strongly typed language or a weakly typed language? So Python is the most famous language among all the languages, so it is maybe strong. Strongly typed or So weakly typed? strongly typed language. So, So what are strongly typed so languages? basically I'm not aware, so I'm just assuming because Python is so strong language. You are Python certified. You have mentioned in your achievement and certificate. See, learning Python is a different thing, but you have certification in Python. Yes. So this is okay. What are list and tuples in Python? Sir, list and tuples, sir, basically, these are data types in Pythons. These contains the elements in it. Like uh, list shows by the square brackets, and tuple shows by the parentheses. Why header files are not used in Python? Because in Python is developed in the way that in its backend there are already everything is sorted, so we don't need the what we can say header file. Why can't we make that sort of sorting in C or C++? Because C and C++ are old languages. At that time, whoever developed the language, because it was the initial way when they are developing the programming language, and Python developed later. So as the time is increasing, they increase the quality in code. Yes. Okay. In which semester you have scored the maximum marks? So I believe so. Maybe in so I don't remember exact. Minimum So marks? minimum in first semester. What were the subjects of first semester? So first semester was totally out of technical subjects. So Subject yes, names sir. I want. So it was chemistry. It was math M1, and sorry, 1 minute, sir. It was ED and communication English. Okay. Uh, what are your strengths, Nilisha? I'm It's okay, sorry. sir. Yeah.
What are your So my strengths? strengths first is I see problems as opportunities always, and second I am an enthusiastic person. Wherever I invest my energy, I do the work with surety of 100%. So if You invested your energy in Python, but you are not aware of Python, so you are not. I'm not agreed with your point. so, Okay, next one. yes, sir. So what you said, maybe I need to revise the. It doesn't mean that I did not put the energy. Maybe I did not did the enough practice to perform. So if you're not able to make a project in a company, or you provide a project with lots of bugs, we send it to client, and then you say, "Oh, I have not done proper homework." Next client will be super happy. One client is gone because of your this attitude, right? Uh, yes, sir. But it will not. It will never happen. I will always. We are hiring more than 8 lakh people. We only have vacancies for 50,000 people. More than 8 lakh people have filled our form. We have vacancies for 50,000 people. It is 1 out of 8. So why Nilisha Jain should be those 1 out of 8 candidates? Yes, sir. So sorry, sir. I actually did not get completely what you are trying to say. I am saying out of, suppose I want to select 8 candidates. I have a list of 8 candidates and I want to make a choice of one Yes. candidate who will be a part of our company. So why I should select Nilisha Jain and reject those 7? Yes, sir. So you can select me because I am a I am a quick learner. I can perform. I can practice what I am going to perform. I am I am a hard worker. I don't give up easily, and I respect those who train me. I make them count on me always. So I am goal oriented You always. said, okay, I got your point. You said you can select me. One of my candidates whom I interviewed, he said you should select me. So his conviction was more, I think. So you should select me. You said you can select me or it's your choice. But the other candidate said, no, you should select me because I have those abilities with me which you are looking for. Okay, forget about all things. I want your two biggest weaknesses, and please don't tell me that I am, don't tell your strength as a weakness. Like I am very hardworking. I sometimes forget to eat and all that. I know student come and fool us here. Okay, so please tell me your honest weaknesses which you have. We accept that we all are human beings. I have some weakness. Every one of us has some weaknesses. I want you to be honest and tell me two of your weaknesses Okay, sir. which you are troubled about or which you want to work on. Yes, sir. So basically, first thing is that I sometimes become inconsistent. I always try to be because everything can be achieved by consistency, but I sometimes become inconsistent. That's why I get results not according to my expectations. And second can be sometimes time management can be a concern. So but I always try to work on both the things. Since you said we are humans, we can not be same every day, but yeah, I try to update myself every day. What you are doing to work on your consistency issues? So for consistency issues, I try to write the things what I have to do. Like I try to plan my day as like if I have to do something tomorrow, I try to write down. If I forget tomorrow, I can just go through the things what I have planned and I can do. But still, I always try to update again. Okay. In your team, one of your team member who is an excellent coder, and you can't just let him off your team. He is of great use to your team, but his way of talking to your fellow team members is not good, and everyone is offended because of his behavior. So, what action as a team lead are you going to take? So first of all, if this will be the scenario, I will not going to judge that person because this is his habit, and habits can be learned and unlearned. So if I can teach him, if I can tell him that if you can.
Suppose he comes and insults you, you are the team lead. Yes, sir. He comes and insults you, you are the team lead. He will set an example for others. Others will come and insult you, Nilisha. Yes, sir. If I Still, are you going to teach him? So first, I would try my best to become a humble team leader. Okay, everybody complained about him, but as a team leader, I have to think what I believe. So first, I would try to explain him. I would try to make him better. But if he's not working, I can do anything. If the person is not willing to do, I can do. So if I have to take action, I will reach to the point later. But first, I would try my best. First, they will humble Nilisha, and after that, a Hitler Nilisha if he doesn't agrees to your point. So I think Yes or no? everybody should have multiple personalities. So why should we always Yeah, have? very, very good. So, I have a better option using which I don't have to be a Hitler kind of person, and I will not fire him up, and all my problem will get resolved also. Can you think about it? What is there in my mind? See, the problem is the person is not behaving properly with other fellow employees. This is the sole purpose, Yes, right? sir. So So, sir, I told what I I will provide him a solution. I will say, you please work from home. Daily morning, we are going to assign you the task. Whatever problems you have, please try to resolve it on messages rather than on call. This is a strict action from us. If you want to talk anything to our team, you just come and tell me. I'll forward it to my team. I'll act as an intermediator. But you please do work from home. yes, sir. I did not think that. This is a formal solution as well as a practical one. Yes. Okay, great. Once again, I just want to make you team lead once again. And there is only vacancy of one member in your team, right? You are looking for good coders as well as the one who can handle your project nicely. Now, just one vacancy left. You have two choices. You have one is to select experienced person who has been working with us since last 40 years. With superb experience, and his experience can make your project go next level. But he is very weak at coding, and in every project, coding part is required. On the second hand, there is a newbie with full of enthusiasm who has recently joined the company, an excellent coder, super excellent coder, who can again take your projects to the next level with his coding abilities. Whom will you choose, the experienced one or the fresher, and why? So, Remember, the experienced one does not have much of coding knowledge, and with experience comes a bit of ego also. So, whom will you choose? so last part I missed. What did you say about? The one who is experienced did not have much knowledge of coding, Yes, and in every project, little knowledge of coding is required. But the one who has an experience will have some ego also. Now he is working in TCS since last 40 years. yes, sir. So will you go with experienced person or with the newbie? But remember, whenever you will face trouble, the experienced one can guide you with his experience. Yes, we have faced this so many times now. This is a way to overcome this problem, or how to deal with clients he might be knowing in a better way. But the newbie, new enthusiast, new coder can be of great use to you because the enthusiasm level of freshers are just next level. Yes, They're ready to work overtime. They're ready to make sacrifices. It's like a new blood is circulating in them. yes. Sir, in that case, first of all, sir, that experienced person, if the person is working since 40 years almost, I don't know why he's not a good coder. Because experience make everybody a good coder. See, in my company, we have a profile for many one. We have a person who makes tea for everyone. Now, you can't expect to be a good coder, Okay. right? He has been hired for a different profile. So in team, if you have a team of 7 members, it doesn't mean that all 7 are coders. Now this is not a team. Yes, sir. A team is a combo with all the flavors. Someone will be a good coder, someone will have great communication skills. You can use this communication skills person to deliver presentations and talk directly to clients. The coder one can handle the back end part of your project. You might be having some excellent HTML CSS developers who can be very useful for designing the front end development part of your project.
Yes. right? So there can be a flavor of people. So it doesn't mean that if someone has 40 years of experience, maybe he might be of different profile. In that case, because if we are working on a project, we need an enthusiastic person, or of course, we need to focus on code because we are working for others. So, first choice will be the person who is enthusiastic and who is the actually good in coding. But the person who is part of our team since very long, we can assign the different role in different position, maybe. You have one position. Now this is the problem. As a team lead, you will have to make. I see you as my team lead, and I want to hire you as my team lead. I'm looking if you have those qualities. I'm not looking. See, I can easily give you a software development role, but I'm giving you a project lead role. I'm not hiring you for just 1 month. I'm hiring you for the next 10 years. I want Nilisha to be the project lead in the next 3 to 4 years. So I want to see if you have those qualities. So you'll have to make some tough decisions being a team lead. So what are you going to choose? You are going to choose fresher? So in that case, definitely I will go to choose the fresher because it's a because it's we are working on project. It is not we can take personal everything, especially in professional areas. Okay, okay. Could you please tell me something about your internships, projects, and certifications? Yes, sir. So internships are that I mentioned. Digital creators have been part of this internship since 2 years. Actually, seniors of our college started this, and they hired me as an intern, and I got to know about web technologies here, and I worked on live project with them. And more than that, I got chance to work in a team, and I really felt I really found that. How to make others people comfortable working with me, how to make other people familiar with me who are unknown, and I got chance to be the part of some events also. And second internship it was just a 1 month internship because I wanted to learn about the technology. So yeah, here I just work on little bit of web technology, and so certificates if we can see this AWS certificate and Python certified certificate happened in our college only. So we prepared there, and that BC English certificate was about learning different English, that is British English, and which we can use globally. So these are global certificates. So what projects have you developed while doing your internship? Sir, basically, in first internship, there is a client who has who had its own travel agency. So basically, we created the website. Actually, I joined them when website already made. And Elisha, could you please help us reduce the background noise? There is a lot of background noise coming. Please give me 1 minute. Yeah, yeah. You can take no Yeah. issues, no issues. Yeah, coming back to your project. Yes, sir. I was explaining. So the time I joined this organization, I did not know much about technology. So they guided me also. So we worked on the travel website, travel agency website. So my work was to mainly work on the front end. I designed the code a little bit, and I did not work yet backend side, but I'm willing to work on backend side as well. Along with that, I got chance to know about marketing by an SEO analyst. I worked as a search engine optimization analyst. Where got to know how websites reach and how keywords become popular on search engine. So yes, sir, these were my experience. So. Okay, okay, okay. So all the projects were individual projects, or if it was a team project, then what was your role in that particular project? What role have you played? Sorry, sir. In between, your voice got distracted. What was your role in the project? What role actually you played in your project? So actually, there were my colleague and I. We both work on designing the code. I mean, writing the code basically. So we just started writing the code, and then we assigned to our seniors, and they and afterward they take then by hosting and everything. Okay. Why do you want to join our company DXC Technologies and not other companies?
not other similar companies? Yes, sir. Sir, your company interests me because it is connected with 70 plus countries and 60 plus innovations, and already one lakhs of employees are working there. And when I attended your pre-placement talk, I got to see all of the employees there. So I feel that this is their people are very goal oriented, and I want to surround myself with these kind of people. So I'm willing to uh, be a Okay. part of your We are organization. going to provide you a software development role, and one of our fellow company, some other company provides you the same job role, the same work culture, everything the same, right? Yes. But double the package. What would you do? Sir, at the same time, Yes. so because I am already going through the process, if I got selected from your side No, we first, have already selected you. We have given you the offer letter. You have the chance to decline our letter and join the other company, or you have the chance to accept our offer letter. What would you do? You'll accept or decline. Single answer with no explanation. I need. so if I be very honest, if the organization is same, if the culture is same, post is same, and here the salary is increased, so I think I not only I everybody will choose the great package if I'm. Okay. Okay. What do you do in your free time, Nilisha? So in free time, sometimes so I like to cooking. I just listen to the music, and sometimes I read also. Or more than that, I chat with my friends. Of course, all Okay. this. Yes. So, in cooking, which is your favorite dish which you have prepared till date? So so maybe so. Not a favorite according to you, but according to your family. Like, and Elisha has prepared something, and your family is like, "Wow, superb dish." Any incidents as such happened? So it happens mostly. Everybody says that I cook nicely. So whenever I cook something, my father always appreciates me. So if I tell about favorite dish, my friends also ate. So this is pav bhaji. Maybe so. Yeah. Okay, okay. Nilisha, one very straightforward question. After 20 to 25 years from now, where do you see yourself professionally also and personally also? So 20 to 25 is so long, but is so of course Yeah, the normal human life is 50 years. So I suppose if you are 20 years of age, you're at least going to live 30 more years, right? yes. So So just anything which comes in your mind. Okay, not that long. After 15 years, maybe. yes, sir. After 15 years, sir, I want to see myself, of course, being holding a senior position. Whatever role I assign today or whatever I get update, I want to be a senior and guiding people the way I would get trainings. I would want to train other people. So this is my professional side, and personally, I want to see. I should have. I would want to have a happy family, everybody is settled, and yes, Any personal materialistic goal that I want to have a 3 BHK or 5 BHK flat, maybe on my own money, or maybe a Audi or a Mercedes or a private helicopter. it's not private helicopter, but yes, sir, my own house I should have, and vehicles and everything. What my father gave me, I want to achieve all these things. Okay. Nilisha, why have you choose engineering and particularly IT? There were a number of options for you. Yes, sir. So for choosing engineering, so because engineering means a master. The person who is master is something is the engineer. If the person is software engineer, is mastering software. So I wanted to be an engineer because I want to be the master in particular thing, and because IT is the what I heard when I was choosing the IT is most safe and enhancing place for girls especially. So many of my elders suggested me, and then I did my own research. I found that this could be my place.
Okay, okay. Do you love traveling? Yes, sir, definitely. So, which all places have you traveled? So till now we have traveled south. We went in Chennai side. Also we went. So, so The point of asking is, suppose we offer you a free call on the job location which you want to choose. So, would you prefer a location which is near to your native town, or you are basically from North India, or would you like to explore South India, East India, or West India? so I would like to explore. You like to explore. Okay, okay. Fair enough. Thank you so much, Nilisha, for your time. Your result will be communicated shortly via email. It was nice to talk to you. Thank you. It's interacting with you. Looking forward to it. Thank you so much. ओके निलिशा, लेट्स हैव द फीडबैक कॉल. फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे सुनना चाहता हूँ कि कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल. इट वाज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, या कुछ चीजें चमकी, या कुछ आपको लगा कि यार मतलब हाँ वर्थ इट था. सर एक्चुअली मोर देन वर्थ इट था, क्योंकि अगर मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ, अभी हमारे कॉलेज में सीआरटी ट्रेनिंग हुई थी, मतलब कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग हुई थी. तो जब मैंने वहाँ पे मॉक इंटरव्यू दिया, आई वाज कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड, बिकॉज सर ने बोला था प्रिपेयर होके नहीं आना, और मैं चली गई. और वहाँ पे से आके जो कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, उसके बाद मुझे लगा शायद मुझे नहीं देना चाहिए. आपने बोला था प्रिपेयर नहीं करना, बट स्टिल आई लिटिल बिट प्रिपेयर्ड. सो मुझे और उसके बाद भी आपसे इंटरव्यू लेने के बाद जो मैंने वेबसाइट पे पढ़ा कि जितना पूछेंगे उतना प्रिपेयर कर लो, और आपने जिस उसमें पूछा, तो मुझे लग रहा है और प्रिपेयर करने की जरूरत है. हम्म. ठीक है, तो अगर मैं आपसे एक लाइन में पूछूं कि लाइक निलिशा बिफोर मॉक इंटरव्यू एंड आफ्टर मॉक इंटरव्यू क्या डिफरेंसेस हैं? सर आई एम फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट. यू आर फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट. ओके, पहले मैं चाहता हूँ कि मैं तो फीडबैक आपको दूंगा, बट आई वांट कि आप खुद अपने आप को फीडबैक दें. इट्स लाइक अ सेल्फ टॉक, है ना. 2 मिनट आप खुद से बात करें. आप बताएं कि आप अपने आप को क्या फीडबैक देना चाहते हैं. सर मैं ये सबसे पहले, जैसे आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था पाइथन बेस्ड, एक्चुअली मैंने रिवाइज नहीं करी काफ़ी चीज़ें. मुझे लगा कि ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें पूछेंगे, तो आई थिंक हमें जो मैंने लिखा है वो मुझे पूरी तरीके से अभी फिर से पढ़ना पड़ेगा. एंड आपसे भी पूछना मुझे कि जैसे आपने पूछा, जो जो मेंशन किया है, हर एक चीज़ इंटरव्यूअर पूछता है या फिर कुछ बेसिक चीज़ें पूछ के भी? देखिए, इंजीनियरिंग में 40 सब्जेक्ट होते हैं, है ना. यस सर. इंटरव्यूअर तो सब में एक्सपर्ट होगा नहीं. तो उसके यस. पास क्या होता है, ऑल पॉसिबल सब्जेक्ट की इस तरह की उसको शीट दी जाती है. ठीक है, अभी तो मैं ये फिजिकल लेवल पर रखा हूँ, उनके पास वर्चुअल शीट होती है. ठीक है, तो यस. आपने क्या किया होता है, उनके पास लगाने का ऑप्शन होता है. तो जो जो भी सब्जेक्ट आपने रेज्यूमे में मेंशन किए हैं, उन्होंने वो सब डाल दिए और एंटर क्लिक किया, तो उन सारे सब्जेक्ट पर एक कंबाइंड शीट आ जाएगी फॉर द ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस, राइट. तो इट्स लाइक आप जैसे ऐसा होता है ना, जैसे मिंत्रा वगैरह पर हम शॉपिंग करते हैं, तो वी कैन हैव मल्टीपल फिल्टर्स कि भाई ये साइज होना चाहिए, ये प्राइस होना चाहिए, ये कलर होना चाहिए, ये पैटर्न होना चाहिए, ये कपड़ा होना चाहिए, ये कंपनी होना चाहिए. दे हैव मल्टीपल फिल्टर्स देयर. उनको सब्जेक्ट नेम टाइप करने होते हैं, एंड दे जस्ट प्रेस एंटर, एंड द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सब्जेक्ट विल बी देयर इन देयर हैंड. तो ऐसा नहीं है कि यार आप मान लो कोई सब्जेक्ट लिख रहे हो और उनको बहुत अच्छी नॉलेज है उस पर, ऐसा नहीं होता है ना. तो दे जस्ट व्हाट दे डू, दे जस्ट आस्क द क्वेश्चन, आप आंसर करते हो. उनके पास एक मतलब ऐसा बच्चों ने मेंशन किया होता है, तो उनको एक आइडिया रहता है कि यार डेटा स्ट्रक्चर से क्या पूछना है. तो यार 40 सब्जेक्ट हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि यार कोई भी रैंडमली कुछ भी पूछ लिया. तो इसलिए आपका रेज्यूम मंगाया जाता है. रेज्यूम इज अ रेफरेंस. आप टेलीविजन खरीदते हैं, अब एक ही टेलीविजन में सारी क्वालिटीज नहीं हो सकती ना, है ना. अब आप कलर टीवी लेने गए या ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लेने गए, अब आप उस किसी बंदे से जब बात करोगे, उस जो टीवी का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा या दुकानदार होगा, उससे आप ये तो नहीं बोलोगे कि इसमें कलर क्यों नहीं है. भाई ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, आप उसके फीचर्स के बारे में पूछोगे कि यार इसका साइज छोटा क्यों है, या वॉट एवर इट इज, है ना. तो ये रेज्यूमे जो है ना, ये आपका पैम्पलेट है. अब इसमें आपने अपने जो फीचर्स लिखे, मैं उसको वेरीफाई करूंगा कि वो सही है कि नहीं. यस. मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि मैंने आपसे नहीं बोला निलिशा इसमें जावा क्यों नहीं मेंशन्ड है, मैंने नहीं बोला ना. इसमें सी क्यों नहीं मेंशन्ड है, मैंने तो नहीं बोला. आपने कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ा था, मैंने तो नहीं बोला. आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा था, मैंने तो नहीं बोला.
मैंने तो नहीं पूछा, बट एटलीस्ट जो लिखा है वो तो मैं वेरीफाई करूंगा ना। Definitely, sir. अब मैं कलर टीवी लेने गया हूँ, अब भाई एलईडी है, अब उसमें मैं एलईडी से रिलेटेड इंटरनली जो चीजें हैं भाई, ब्राइटनेस है कि नहीं, इसमें ये है कि नहीं, इसमें वो है कि नहीं, ये सब चीजें मैं पूछूंगा ना। Yes, sir. तो रेज्यूमे में आपने बहुत ज्यादा लिख दिया है, जितना आपको आता है उससे ऑनेस्ट फीडबैक दूंगा। बुरा लगे तो बुरा, देखो जो है मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, इसलिए मॉक इंटरव्यू होता है। अब जब निलिशा का मेरे पास रेज्यूमे आया ना, मैंने निलिशा की ये एक्सपेक्टेशन कर ली और निलिशा यहाँ पर निकली, तो मुझे क्या लगेगा, नॉट अप टू एक्सपेक्टेशन। वही निलिशा के रिज्यूम से मुझे ये एक्सपेक्टेशन मिलती है और निलिशा ये निकलती, Yes, भाई मैं खुश हो जाता, है ना। तो मुझे बहुत कुछ आता था, मतलब मुझे जितना आता था ना, मेरे पूरे क्लासमेट्स को कंबाइन करके लगा लो उतना उनको भी नहीं आता था। लेकिन मैंने अपने रेज्यूमे में सी, जावा, डीबीएमएस केवल 3 चीजें लिखी। मैंने कहा भाई ठीक है, अगर डीबीएमएस पूछूंगा और मैं उसको डेटा स्ट्रक्चर भी वहीं बता दूंगा तो खुश हो जाएगा वो, है ना। तो जो 100% आती है कि यार 100% मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज को लेकर के, वो मेंशन करो। फिर जब आपका इंट्रोडक्शन बोला जाए या बीच में कभी बातचीत हो इंटरव्यूअर से थ्रू आउट द इंटरव्यू, फिर उनको बोल सकते हैं कि सर इन सब चीजों के भी मुझे बेसिक्स आते हैं, वो तो मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी, तो मैं आप लोग को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किए, बट ये मेरी लर्निंग फेजेस हैं, ये मेरी लर्निंग टू डूज हैं। भाई अल्टीमेटली 2 चीजें होती है निलेशा, 3 चीजें इंटरव्यू में। पहली चीज, मुझे आपकी कंपनी में जॉब चाहिए है, मतलब चाहिए है, मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। दूसरा, आपको मुझसे बेटर एम्प्लॉय नहीं मिलेगा, अगर आप मुझे रिजेक्ट कर रहे हो तो आपका नुकसान है। तीसरा, मेरे अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी, हाँ अभी कच्ची खिलाड़ी हूँ, मुझे नहीं आता है, लेकिन मैं सीख रही हूँ, आगे सीखूंगी, ज्वाइनिंग तक नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, ट्रेनिंग के बाद सुपर डुपर लेवल, और जब कंपनी ज्वाइन करूंगी बम फूटेगा। अगर आप उनको ये 3 प्रोमिसेस दिखा पा रहे हो, है ना, बस हो जाएगा काम। yes, sir. मैंने आपका पूरा इंटरव्यू देखा, मुझे कहीं भी ये जील नहीं समझ आई, जैसे फॉर एग्जांपल पाइथन नहीं आता, आपने बोल दिया मुझे अच्छे से नहीं आता, आपने ये क्यों नहीं बोला सर मैं सीख रही हूँ, और ज्वाइनिंग तक इफ यू वांट आप मेरा सेकंड इंटरव्यू ले लेना, अगर मैं एक भी पाइथन का सवाल गलत दे पाऊँ तुरंत रिजेक्ट कर देना, मैं तब तक किसी और कंपनी का इंटरव्यू नहीं दूंगी, क्योंकि मैं अपनी आपकी कंपनी को लेकर सिंसियर हूँ। क्यों नहीं बोला आपने? कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में हमारे मन में भी रहता है कि अरे यार ठीक है ये डीएक्सी चली गई, टीसीएस आ जाएगी। नहीं भाई, मान के चलो ये आखिरी कंपनी है, थोड़ी ज्यादा फटेगी मैं मानता हूँ, लेकिन उससे सिंसियरिटी भी निकलेगी और हम अच्छा भी परफॉर्म करके आएंगे। Yes, sir. तो पहली चीज बताना है, आई एम मेड फॉर योर कंपनी, मैं कंपनी की पूरी रिसर्च करके आया हूँ, आप पूछ लो, जितना आपको नहीं पता होगा उतना मुझे पता है कंपनी के बारे में। मैंने कोरा पे फीडबैक चेक किया, मैंने अपने सीनियर से बात किया है, मैंने कंपनी की वेबसाइट खंगाल मारी है, मैंने लिंक्डइन चेक किया है, ग्लास डोर चेक किया, सब कुछ चेक करके आई हूँ। कर लो ना, 1 दिन लगता है टोटल, कर लो आराम से बैठ करके। डीएक्सी का भी होने वाला है, चलो टीसीएस में तो टाइम है ना, उसका कर लो, है ना। एक चीज, दूसरी चीज क्या, मैं परफेक्ट कैंडिडेट हूँ आपकी कंपनी के लिए, वो आपके रेज्यूमे से नहीं दिख रहा। आपने रेज्यूमे में इतना सब कुछ मेंशन किया है, आता अपने औकात में पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात। देखो सिर्फ रेज्यूमे से सिलेक्शन नहीं होता, अगर हो रहा होता तो यार 1-1 घंटे के इंटरव्यू करते क्या कंपनी वाले, बताओ। उन्हें जो आपसे चाहिए वो सिखा देंगे, आप एप्टीट्यूड राउंड क्लियर करके आओ, इसका मतलब आपका दिमाग अच्छा है, जो सिखाएंगे आप सीख जाओगे, दिमागी लेवल पे कोई कमी नहीं है ना। रेज्यूमे सिर्फ ये होता है चेक करने कि आप कितना ईमानदार हो, क्योंकि अगर आज आप ऑनेस्ट आज हो तो कल भी ऑनेस्ट रहोगे। आपको वर्क अपडेट मेल भेजना पड़ता है जिसमें आपको बताना पड़ता है दिन भर आपने क्या किया, तो झूठे लोग नहीं चाहिए जो झूठा वर्क अपडेट बनाते भाई। बी ऑनेस्ट, 8 घंटे काम किए तो 8 मेंशन करेंगे, 9 नहीं करेंगे। तो इसको बोलते हैं डिसऑनेस्ट पर्सन। आपने लिखा है कि आप पाइथन में सर्टिफाइड हो, आपको आता नहीं है पाइथन में, तो बिल्कुल बेसिक सवाल पूछा था, लिस्ट टपल्स, पाइथन वीकली टाइप, स्ट्रांगली टाइप, ये डे 1 में पढ़ाते हैं पाइथन में, है ना। तो जो चीजें नहीं आती मत मेंशन करो, उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपने रिज्यूम में ज्यादा चीजें मेंशन की है तो सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा होता है तो लोग 10-10 पेज के रिज्यूम बना के जाते हैं ना। सर एक चीज
और मैं सामने प्रूफ हूँ, मैंने सी जावा, हाँ आप पूछना, सी जावा और डीबीएमएस लिख के 9 कंपनीज फोड़ी हैं यार। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ज्यादा लिख रहे हो तो सिलेक्शन होगा आपको, नो नॉट एट ऑल। आप वहां कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो अपने आप को, कम प्रोमिसेस करके ज्यादा डिलीवर अगर कर रहे हो, ऐसे लोग चाहिए। कंपनी में भी दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं जो ज्ञान देते हैं, अरे मैं ऐसा कर लूंगा सर, मैं वैसा कर लूंगा, और जब डिलीवरी की बात आती है, परफॉर्मेंस की बात आती है, तो ठुल्ले पड़े रहते हैं। वहीं दूसरे होते हैं चुपचाप शांति में एक चेयर में कोने में बैठे रहेंगे, और उनका प्रोजेक्ट डेडलाइन के पहले सबमिट हो जाएगा। क्यों? ज्ञान नहीं देते, काम करते हैं, है ना। ठीक है, क्लैरिटी मिली। अगर मैं आपके रेज्यूमे की बात करूं, एक बार मैं अपना पूरा फीडबैक कंप्लीट कर दूं, फिर अपन क्यूएनए कर लेंगे, कोई टेंशन, आपको जो पूछना है पूछ लेना। सबसे पहले रेज्यूमे में आपकी फोटो होनी चाहिए नीलिशा। दूसरा, आपके कॉलेज का आइकन होना चाहिए। ये दो चीजें, ठीक है। आप रेज्यूमे प्रिपरेशन कोर्स देख लेना जरूर से। आप मेरा प्लेसमेंट होगा के अंदर होगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, 2 या 3 घंटे के लेक्चर है, देख लेना उसमें। ठीक है। तो आपको तो फोटो लगाना है, दूसरा अपना कॉलेज का आइकन लगाना है, ठीक है। नेम, मोबाइल, ईमेल आईडी, बाकी सब एकदम ठीक है। आपके इतने अच्छे सीजीपीए हैं, 8.83, हर सेमेस्टर में 8 के ऊपर ही गया होगा ना, यस सर। नहीं सर, लगभग लगभग, तो क्यों नहीं भाई? यस सर। फर्स्ट में कम था, 5 सेमेस्टर 6 सेमेस्टर में तो 8 के ऊपर ही गया होगा यस ना, क्यों नहीं मेंशन किया? सर, क्योंकि तुमको 6 बार 8 सीजीपीए दिखाने का मौका मिल रहा था, क्यों नहीं दिखाई अपनी अच्छी बात? सर मुझे पता नहीं था, सब ओवरऑल लिखते हैं तो मैंने भी ओवरऑल लिखा। ऐसा कुछ नहीं, आपने मेरा रिज्यूम नहीं देखा, मैंने तो सेमेस्टर वाइज लिखा है भाई। मैंने मेहनत की है यार, वो मेरी अचीवमेंट। आप ये बताओ, जब आप एक टीवी का एडवर्टाइजमेंट देखते हो, क्या नेक्स्ट लेवल तारीफें लिखी रहती हैं, हाँ भाई स्क्वायर है, प्लास्टिक मटेरियल है, भाई सबको दिख रहा है ना, क्यों मेंशन करी फिर तुमने? तारीफ, अपनी जो पॉजिटिव चीजें हैं वो दिखाना चाहिए आपके सारे सेमेस्टर। और भाई फर्स्ट में कम थे ना, सेकंड में बढ़े ना, इट शोज कि आप गिर के उठना जानते हो। एक प्रोजेक्ट में आपको ढंग से रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया, आप अगले में उठ के खड़े होगे, गिव अप नहीं मारोगे, पॉजिटिव क्वालिटी शोकेस हो रही। इस रेज्यूमे से आपका एटीट्यूड पता चल जाता है ना। और नीचे पर्सनल डिटेल में फादर नेम मदर नेम नहीं जरूरत, तो मैं क्या करूंगा आपके फादर और मदर के नेम का, नहीं सर, है एक्चुअली ना, बिल्कुल बहुत जरूरत नहीं है। फॉर्मेट मिला था। सर ये जो रिज्यूमे है ये डीएक्सी में बनवाया था, तो उसके बेस पे अच्छा, बनवाया होगा तो वो एक अलग चीज है, बाकी इन जनरल जो रेज्यूमे होता है उसमें नीड नहीं होती, अगर उनने मांगा है तो इट्स वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी सब बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है। और ये जो जब आप डिक्लेरेशन करते हो ना, तो इसमें जो सिग्नेचर है ये पेन से किए होने चाहिए, तो उसका प्रिंट निकलवा के पेन से सिग्नेचर करना है, यस जो लास्ट में आपने किए हुए। यस सर, एक्चुअली डिजिटली ठीक है, सबमिट की थी। और प्लेस के साथ, हाँ हाँ, नहीं तो प्रिंट निकाल के पेन से करके फिर स्कैन करके डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, यस ऐसा कर सकते हैं। बाकी चलेगा, अगर वर्चुअली है तो चलेगा, बाकी फिजिकली जब भी ले जाऊँ ना रिज्यूमे, तो ये ऐसे देना होता है, ये साइन रिज्यूमे है मेरा, सारे डिक्लेरेशंस करेक्ट है, और यहाँ पर आपको प्लेस के साथ डेट भी लिखना होता है, किस डेट को आपने डिक्लेरेशन किया। यस ठीक है, बाकी सब बढ़िया है। और ये जो इंटर्नशिप है ये अभी भी आपकी चल रही है क्या? यस सर, चल रही है सर, बट एक लिखा है ना मार्च 2020 टू प्रेजेंट, यस सर, बट ये सर एक्चुअली ना नॉन टेक्निकल बट से उसको ज्यादा है। क्योंकि यस सर, बोलिए। क्या, सर एक्चुअली नॉन टेक्निकल। नहीं इसमें एक्चुअली कि आपने प्रेजेंट लिख रखा है, तो कोई भी कंपनी आपको ज्वाइनिंग देने से पहले फिर कतराती है कि ऑलरेडी कहीं पे काम कर रही है, तो उस इंटर्नशिप को आप लिख दो, खत्म हो गई है, कोई नहीं क्रॉस वेरीफाई कर रहा है, तो खत्म कर दो। अभी क्या करोगे इंटर्नशिप करके, कितने समय से तो कर रहे हो, और मार्च 2020 से कर रहे हो, यस सर, बट अभी तो है ना। रेज्यूमे सबमिट हो गया। कोई बात नहीं है, उनको आप अपडेट, अभी आपका वर्चुअल इंटरव्यू होगा, यस सर, वर्चुअल होगा। तो कुछ नहीं है, आप नया रेज्यूमे बना के उसकी गूगल ड्राइव की लिंक रखना शेयरेबल, और वो लिंक आप अपने पास रखना, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे होगा मोस्ट प्रोबेबली इंटरव्यू, या उनके खुद के पर्सनल प्लेटफॉर्म पे, तो उसमें चैट का ऑप्शन होता है, आप अपना अपडेट रेज्यूमे दे सकते हो। नहीं भी है तो अगली कंपनीज के लिए बना लो, कोई ऐसा रेज्यूमे में कोई ऐसी कमी नहीं दिख रही जिसकी वजह से मैं आपको रिजेक्ट करूं। लेकिन अब जो रेज्यूमे मेंशन कर दिया आपने डीएक्सी में, उसको फिर प्रिपेयर कर लो अच्छे से, यस सर, है ना।
देखो मैं आपको बताता हूँ निलिशा, जब आप ज्यादा चीजें लिखते हो ना, आप खुद डरे हुए होते हो यार, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो बेटर है कम चीजें लिखो, खुश रहोगे, कॉन्फिडेंस आएगा अपने अंदर, यस सर। है ना। ठीक है। सर। बैकग्राउंड नॉइस थोड़ा सा रिड्यूस करने की जरूरत यस सर। है ना। इस बात का ध्यान, अभी तो ठीक है चलता है मॉक इंटरव्यू, बट एक्चुअल इंटरव्यू में बिल्कुल पेरेंट्स हो, जो भी हो, रिश्तेदार हो, जो भी हो, दोस्त हो, सबको बोलो भाई बिल्कुल शांति पकड़े। यस सर। ठीक है। और दूसरा, ऑडियो वगैरह ठीक है, ड्रेसिंग एंड ठीक है, थोड़ा सा ये मीटिंग आप बढ़ा सकते हो तो कोशिश करना वो बढ़ जाए। यस सर। बाकी सब ठीक है, परफेक्ट है। ठीक है। और उस दिन पावर बैकअप रखना एक तो, है ना, इन्वर्टर वगैरह कुछ भी हो, पावर बैकअप। दूसरा, नेटवर्क बैकअप रखना, अगर आप जियो से यूज कर रहे हो तो एक बीएसएनएल या कोई दूसरा नेटवर्क बैकअप रखना, हो सकता है जियो के सर्वर डाउन हो या किसी भी एक्सवाइजेड कंपनी के सर्वर डाउन हो, यस सर। है ना। तो ये सब चीजें प्लान आउट करके रखना। ठीक है। हाँ, आप पूछो, आपको क्या पूछना है। यस देखो सर। मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको थोड़ा लग रहा होगा कि यार सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं, बट ये सब चीजें बहुत जरूरी है, आपका सिलेक्शन चाहिए यार, हमको ये पर्पस यस सर। है ना। पूछो। सर आपने बीच में क्वेश्चन पूछा था वो कंपनी का कि अगर वो कंपनी हायर पैकेज देती है और हम नहीं दे रहे, तो वहाँ पे एक्चुअली क्या तो आंसर है? ईमानदार, ईमानदार है ना, आपने बिल्कुल सही आंसर किया कि मैं जाऊंगी हायर पैकेज पे। देखो क्या होता है ना, अपनी वैल्यू आप खुद बनाते हो, ये लाइफ का भी फंडा है और इंटरव्यू का भी फंडा है। आप मुझसे पूछो ये क्वेश्चन, पूछो। कि आपको ऑफर होती है दो अगर हायर, हायर पैकेज एंड लोअर हाँ पैकेज। हायर पैकेज दिया तो क्या हुआ, मैं पता क्या बोलूंगा, आप मुझे 4 लाख का पैकेज दे रहे हो, वो 8 लाख का, पता क्यों दे रहे हैं वो, क्योंकि उन्होंने मेरी वर्थ देख रखी है, मेरी कीमत, मेरी वर्थ 8 लाख की एज अ फ्रेशर। तो जो मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है, मेरी वर्थ देख रहा है, मेरी वर्थ के अकॉर्डिंग मुझे सैलरी दे रहा है, मैं उसके पास जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। सर आप तो सीनियर हो चुके हैं तो आप ऐसा बोल सकते हैं, अगर मैं से बोलूँ अगर उनको एटीट्यूड नहीं, नहीं लगा देन। कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं भाई, दिस शोज योर कॉन्फिडेंस। क्या एटीट्यूड प्रॉब्लम है भाई, दिस शोज योर कॉन्फिडेंस, कितना बोल्ड पर्सन मेरी कंपनी में आ रहा है ना। उनको लुल्ल पर्सनालिटी नहीं चाहिए, यू आर 22, यू आर 23, 20-22 साल के हो, वो एनर्जी एंथुसियाज्म दिखना चाहिए। और भाई खुद, अगर जो इंटरव्यूअर है उसको खुद अगर कंपनी कोई दूसरा डबल पैकेज देगी, वो खुद भाग जाएगा, है ना। यस सर। राइट सर। उसको सिंपल बोलो, सर यू ऑल नो लर्निंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टूडेज टाइम, बट एट द सेम टाइम मनी प्लेज इवन मोर इम्पोर्टेंट रोल, राइट। अगर लर्निंग सेम है दोनों कंपनीज में, अगर लर्निंग सेम है दोनों कंपनीज में, अर्निंग वहां ज्यादा है, तो मैं डेफिनेटली उसको ज्वाइन करूंगी। तो सर अगर कोई कंपनी मुझे डबल पैकेज दे रही है, ऑब्वियसली आफ्टर इंटरव्यू ही दे रही होगी, तो उसने मेरी वर्थ देखी होगी सर, उसके अकॉर्डिंग दे रही होगी, तो मैं ऑब्वियसली उस कंपनी को प्रेफर करूंगी जहां पर मेरी ज्यादा वर्थ है, एज सिंपल एज दैट, यस सर। है ना। यस सर। बस सर। उसको सिंपल सा बहुत प्यार से पोलाइटली, और जो स्माइल इंटरव्यू के स्टार्टिंग में थी एंड तक जाते जाते पूरी खत्म हो गई, ऐसा क्यों। इंटरव्यू में देर विल बी क्वेश्चंस जिसका आप आंसर नहीं कर पाओगे, एंड दे एब्सोल्युटली नो कि आप ह्यूमन बीइंग हो, सब कुछ आपको याद नहीं हो सकता है, कुछ चीजें आपसे नहीं बनेंगी, आप जब कंपनी में होगी कुछ नेगेटिव सर्कमस्टांसेस भी होंगे, बट उसके बाद भी आपको एकदम बोल्ड रह करके मुस्कुराते हुए चीजों को फेस करना है, ऐसी पर्सनालिटी तो चाहिए ना। आपसे पूछता हूँ, आपके पास दो दोस्त हैं आपके, एक दोस्त है जो हमेशा दुखी रहता है, एक दोस्त है जो हमेशा खिलखिलाता रहता है, किसके साथ रहना पसंद करोगे। सर ऑफ कोर्स जो पॉजिटिव वाइब्स दे जो खुश रहे। पॉजिटिव है, जो खिलखिलाता है, खुश रहता है, तो कंपनी में भी ऐसे लोग चाहिए ना, मनहूस लोग थोड़ी ना चाहिए। यस सर। तो योर स्माइल इज द बिगेस्ट रीजन फॉर योर सिलेक्शन, उसको लूज नहीं करना, यस सर। है ना। और इस कॉन्फिडेंस से जाओ कि मेरा तो भाई सिलेक्शन हो चुका है, अब एचआर से जनरल मीटिंग हो रही है कि भाई हाँ ठीक है, पूछ लो जो पूछना है। वो कॉन्फिडेंस एकदम नहीं आएगा, वो आप अपना थोड़ा रेज्यूमे हल्का करो, बहुत भारी कर दिया है आपने उसको, बहुत सारी चीजें लिख एक्चुअली दी उसमें, पहले ना इससे भी सीएस ज्यादा सीएस। पहले से भी ज़्यादा भारी था, पर जब कॉलेज में मॉक इंटरव्यू हुआ तब मुझे पता चला, तो मैंने बहुत कुछ एलिमिनेट किया। बट एक्चुअली जो आज के लिए ना मुझे कल ही पता चला कि मेरा सिलेक्शन मतलब
ऑनलाइन टेस्ट पास हो गया है। तो जब मैं शेड्यूल कर रही थी तो मैं प्रिपेयर भी नहीं थी, तो पर मैम ने बोला कि आज का ही टाइम है, तो उन्होंने बोला जैसी प्रिपरेशन है आ जाओ। तो मैंने मेन वो चीज़ें पढ़ी जिन पे मुझे बोलना है, तो कुछ चीज़ें रह गई, बट वो अगर मैं प्रिपेयर करती तो मैं सर डेफिनेटली बोल सकती थी। हाँ, तो अगर देखो सी अगर इस रिज्यूमे पर आप प्रिपरेशन कर सकते हो तो इससे तो अच्छी बात हो ही नहीं सकती यार। एक कैंडिडेट जिसने इतना सब कुछ लिखा है और उसको इतना सब कुछ आता भी है, इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। बट अगर लिख कर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं यार वो नेगेटिव होता है, सर तो इससे अभी बेटर ऑप्शन है कम लिखो कम बताओ। ये चीज़ अब मुझे पता चल गई थी जब मैंने मॉक इंटरव्यू दिया था, तो उसके बाद हम्म। से कर दिया। तो अभी डीएक्सी में चलने दो, इन पर वर्क करो आपके पास जितना भी समय है। फिर अगला जब कोई भी इंटरव्यू किसी भी कंपनी का दोगे थोड़ा सा उसको हल्का कर देना। सर मैं आपको सेंड कर सकती हूँ नया बना के कहीं पे? आप मैम को सेंड कर देना, जिनसे आपकी कम्युनिकेशन हो रही है ना उनको सेंड कर देना, मुझ तक पहुंच जाएगा, ठीक है। यस सर। चलो ओके, और कुछ कुछ एंड अप करें। सर अभी तो नहीं लग रहा कुछ पूछने का। ठीक है, कुछ और पूछना है सर टेलीग्राम है, ये सब आप पूछना। मुझे बोलना है कि हाँ। सर सर आपसे पढ़ के ना मतलब अभी बहुत कॉन्फिडेंस, लाइक पहले मेरा ऐसा था, मेरा एप्टीट्यूड रीजनिंग बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था मुझे लिटरली। आज भी एप्टीट्यूड इतना अच्छा नहीं है, बट आपके जितने लेक्चर्स देखे अभी, और अभी जैसे डीएक्सी निकली तो मैं आपको सच बताऊं सबका ऐसा था कि नेट पे सभी सर्च कर रहे थे, मैंने भी किया था, पर उसमें भी बहुत लोग का नहीं हुआ, मेरा हो गया बिकॉज मुझे कॉन्फिडेंस था कि अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं कर लूंगी। सो सब बोल रहे तेरा हो कैसे गया, अपना सबका सेम था, मुझे भी नहीं पता, पर आपने बोला था कि 50% कॉन्फिडेंस होता है, 50% हमारी प्रिपरेशन होती है, तो शायद माइंड में वो था, तो आई थिंक मुझे आपको क्रेडिट देना चाहिए कि मेरा ऑनलाइन निकल गया, क्योंकि मेरे इवन वो फ्रेंड्स का भी नहीं निकला जो मेरे से बहुत ऊपर है, तो वो बोलते तेरा कैसे निकल गया, मैंने कहा, पता नहीं। मैं आपको एक चीज बताऊं, मतलब मैं क्रेडिट आपके पेरेंट्स को जाता है और उन्होंने इतनी मेहनत आप पे की है। आ, देखो, मैं एक चीज बोलता हूँ, हमारा जो कोर्स है ना, हम हमेशा बोलते हैं नॉलेज गेट फैमिली। तो इट्स नॉट लाइक यार मैं टीचर हूँ आके पढ़ा गया खत्म। डेली हम यहाँ पर प्रेयर्स करते हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि यार उनकी हेल्थ अच्छी रहे, बढ़िया पढ़ें, किसी गलत चीज में ना जाए और उनका सिलेक्शन हो जाए, सब मेहनत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो प्यूरिटी है जो भगवान को भी दिखती है। और भाई बहुत लोगों के साथ ऐसा मिराकल हुआ है, हमारे स्टूडेंट्स के साथ, सर पेपर खराब गया फिर भी सिलेक्शन हो गया। और बहुत बच्चों के जो हमारे स्टूडेंट नहीं है, पेपर अच्छा जाता है तो भी सिलेक्शन नहीं होता। तो कहीं ना कहीं यार वो एलिमेंट ऑफ ग्रेस हमेशा रहता है, क्योंकि मतलब नॉलेज गेट में मैं बोलता हूँ यार, मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन एकदम प्योरेस्ट है निलिशा। मतलब इट्स नॉट लाइक यार मुझे 40 मिनट मॉक इंटरव्यू के पैसे मिल रहे हैं तो मैं 40 मिनट में खत्म कर दूं। आप लोगों का करियर, आप लोगों का फ्यूचर हमारे लिए सब कुछ है ना, क्योंकि वो आपके पेरेंट्स के लिए सब कुछ है और आपके पेरेंट्स हमारे लिए सब कुछ है यार। क्योंकि हम सबके पेरेंट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उनकी उनके सपने पूरे करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई। बच्चों से हमको कोई लेना देना नहीं होता, बच्चे तो जस्ट एक इंटरमीडिएट है, अल्टीमेट पर्पस उनके पेरेंट्स को खुश करना है। बढ़िया मेहनत करो, मिलके पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है, मैं तो बैठा हूँ, कोई लास्ट दिक्कत है तो। क्वेश्चन, सर आप हाँ हाँ। 2020 पास्ड आउट है, मैंने आपके रेज्यूमे में देखा था, और हम्म। अभी सिर्फ 2022 है, सो सर आपने इतना मतलब अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन इतनी जल्दी कैसे स्टार्ट किया, यार और मेहनत है, पता काफी है। आगे भी निकल गया, मतलब अच्छे लगे। हाँ, अभी हमारे यूट्यूब पे पिछले 28 डेज में 4 लाख के ऊपर व्यूज हैं। चार यस लाख से ऊपर बच्चों ने देखा हुआ है हमको पिछले 28 दिनों में। अच्छा है, चल रहा है, बस आई डोंट नो कैसा हुआ, बट मेरा ये है कि अगर हम कोई काम ईमानदारी से कर रहे हैं और उसमें अपना 100% दे रहे हैं ना, सब यस हो जाएगा। कॉलेज के टाइम भी ना मेरी आदत नहीं थी खाली बैठने की, मैं खाली नहीं बैठ पाता हूँ। तो कंपनी भी इसलिए नहीं ज्वाइन की कि यार 8 घंटे तो कर लिया काम, उसके बाद क्या करूंगा मैं जब घर जाता हूँ ना मैं घबरा जाता हूँ, भाई क्या करूंगा, मतलब ऐसा है कि तुरंत नींद आ जाए। नहीं तो ऐसा है मैं क्या करूंगा, मतलब मुझे मुझे कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट से सूझता ही नहीं है कि यार कुछ देखना है या क्या यूट्यूब चलाना है, ये ऐसा लगता है जल्दी सुबह वापस ऑफिस जाऊं, है ना। तो पूरी टीम हमारा सब कुछ डाल रही है यार, इसमें जो है सब कुछ पूरी टीम डाल रही है। सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ है अभी, क्या ब्रेकफास्ट होता है, क्या कब लंच होता है, क्या होता है, किसी को कुछ नहीं पता होता है यहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि टीम के कोई वर्किंग आवर्स है क्या है यार, मतलब जब मन करता है आते हैं, काम करते हैं, लेट नाइट तक रुकते हैं, सब नेक्स्ट लेवल माहौल रहता है यहाँ ओवरऑल, ऐसा है। बस चल रहा है, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। और एक चीज है कि हमने यार कभी भी ना झूठे प्रोमिस नहीं किए हैं बच्चों की। जो
प्रॉब्लम थी जो मेरे साथ होती थी प्रॉब्लम यार, कि मुझे कंटेंट तो बहुत मिलता था, लेकिन आइदर फेक कंटेंट मिलता था या तो फिर मेंटोरशिप कभी नहीं मिली मुझे। यार कोई मुझे उंगली पकड़ के चलने वाला बंदा नहीं मिला। मैं मॉक इंटरव्यू किसी भी एक टीचर को हायर करके कंडक्ट करा सकता था, उसको 2-3 दिन की ट्रेनिंग देनी थी, काम हो जाता। बट यार एक वो है कि आप मुझसे भी पर्सनली बात फिर कभी नहीं कर पाते ऐसे में, है Yes, ना? sir. मॉक इंटरव्यू इज द वे जहाँ पर हम बात कर पाते हैं, सब कुछ है, आप मुझसे पूछ सकते हो। और एक ये होता है कि एक फेथ बस बच्चों को दिलाना है कि यार वी आर देयर। और हम ऑनेस्टली आप बताओ ना, कौन सा प्लेटफॉर्म ऐसा है जो इस लेवल पर मैं बच्चों से एसोसिएटेड रहता हूँ, है ना? तो ये बस मैं यही सक्सेस मंत्र है। और आपसे भी बस एक ही चीज बोलूंगा यार, अपनी सक्सेस को अपने तक मत रखना, है ना? आपके जूनियर्स आप तक आएंगे नहीं आएंगे, डरेंगे शर्माएंगे, खुद जाके अप्रोच करो। जो गलतियां आपने की, आपका कल इंटरव्यू है, परसों इंटरव्यू, आप आज मॉक इंटरव्यू करा रहे हो, आप अपने जूनियर्स को जाके बोल सकते हो कि भाई पहले से करा के रखना, भाई रेज्यूमे में इतना इतना सब कुछ नहीं लिखना है। मैंने क्या शुरुआत पता कैसे की? जैसे ही मेरा पहली कंपनी में फूट गई ना, मेरी कंपनी पहली कंपनी में, मेरे को लगा भाई बहुत बड़ा अचीवमेंट कर दिया मैंने, मतलब मेरे को उम्मीद नहीं थी अपने आप से कि मैं कंपनी कंपनी क्लियर कर पाऊँ। मैं इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया कि भाई बहुत बड़ा तीर मारा। मैंने पता क्या किया? मैं प्लेसमेंट प्रिपरेशन विद यस सर, मैं सीनियर, और मैंने अपने सारे जूनियर्स को ऐड किया कि मैं आपको बताऊंगा कैसे प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करनी, फ्री बताऊंगा, पूरा गाइडेंस दूंगा। ग्रुप बनाए, बच्चे ग्रुप ज्वाइन करते गए और बच्चे डाउट पूछते गए, मैं आंसर करता गया। ये था, तब तक नॉलेज गेट का कोई सीन नहीं था। मेरे नाम से ऑल इंडिया में, मुझे भी नहीं पता था, 45 के ऊपर ग्रुप चल रहे थे। ग्रुप ऐसे, यस सर इन इंदौर, यस सर इन ग्वालियर, यस सर इन इलाहाबाद, यस सर इन रुड़की, इस तरह के ग्रुप्स चल रहे थे। कुछ ग्रुप्स में तो मैं खुद ही एडेड नहीं था, मतलब ऐसा तक हो गया था कि लोग फेक यस सर बन के कोर्सेस प्रमोट करने लगे थे, ये नौबत आ गई थी। तो यार सबको गाइडेंस की जरूरत है, बस ये है कि वो डरते हैं, पूछते नहीं है, ये उनको पता ही नहीं रहता, ओवर कॉन्फिडेंस में घूमते। तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आप मेरे कोर्सेज प्रमोट करना, पर उनको एक हेल्पिंग हैंड, उनको ये होना चाहिए कि यार नीलिशा दीदी हैं यार हमारे साथ, हो जाएगा बस। yes, मुझे अपनी ब्रांडिंग नहीं बनानी, मुझे अपने हर एक स्टूडेंट की ब्रांडिंग बनानी है। हर एक स्टूडेंट अपने आप में यार बाप होना चाहिए कि हाँ यार कॉलेज जाए तो दिखे, हाँ भाई नीलिशा आई है, समझ रहे? भीड़ इकट्ठी होनी चाहिए, तब तो कुछ किया है ना, yes, sir. है ना? ठीक है, मतलब Yes, ऐसा होना चाहिए भाई। मैंने 9 कंपनीज क्रैक की, कुछ मिला क्या? नहीं ना। बच्चे आते कहते यार ये बाप आदमी आ गया यहाँ, एक में नहीं हो रहा, वो 9 फोड़ के बैठा है, समझ रहे हो? तो ये होना चाहिए, है ना? तो yes, मस्त करो यार, अभी क्या एज है, अपना काम ही पढ़ाई करना, खाओ पियो ऐश करो, पढ़ाई करो, बस खत्म। ठीक है, yes, sir. चलो कुछ भी पूछना है पूछना, बिंदास, कोई टेंशन नहीं। ठीक Yes, है, sir. अभी एंड Thank करते हैं, you. बाय। Yeah, bye, sir. सो गाइज दिस वाज द एंड ऑफ मॉक इंटरव्यू। मैं उम्मीद करता हूं आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। यदि आप भी अपना मॉक इंटरव्यू शेड्यूल कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रही है, मॉक इंटरव्यू बाय यशजन सर। जाकर के अपना मॉक इंटरव्यू जरूर से शेड्यूल कराएं, ताकि मैं आपको बता पाऊं कि आपने इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म किया और क्या क्या आपके अंदर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।